Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in the yesterday's session, we saw that there was a slight recovery in the market. The Nifty was slightly up by 36 points, and the close was at 19,443 level. So if you see that in the last 2 to 3 days, the Nifty is slightly moving up, and the level of this 19,300 is acting as a support. So we believe that this momentum should continue, and on the higher side, 19,500, 19,600, this should be the level for today, maybe tomorrow's trading session. So 19,600 is what we are looking at. On the way down, 19,300 is the support zone. We believe that this even 19,600, there is a much more higher probability that this 19,600 level will also be taken out, and 19,800 should be the higher side reach. So net the range for the Nifty is 19,300 and 19,800. Immediately we are looking at 19,600. So bias is positive. Any intraday corrections during the day, and today is the expiry also. So I think intraday corrections should be viewed as a buying opportunity. So the bias will be positive. The same thing with the Bank Nifty. The Bank Nifty was is also slightly moving up day by day, but then that momentum is missing in the Bank Nifty. Yesterday, when the market was up, the Bank Nifty was down by close to 80 points. So, and even if you look at the advanced declare ratio, that was 50-50 in the Bank Nifty. So Bank Nifty, there is a slight resistance at 43,800 mark, and so I think as and when this 43,800 mark will be taken out, or in maybe today, tomorrow, whenever that level is taken out, I think another 1,500 points rally is due in the Bank Nifty. The good part for the Bank Nifty is earlier we saw that 43,500 was the level from where the Bank Nifty has seen a breakdown. And for the last 2-3 days, on the bank index is sustaining above those levels, so which is a positive sign. So for the Bank Nifty also, I believe we are going to see a positive trigger, but the that trigger will come when the Bank Nifty closes above 43,800 mark. Bias for both the index is positive, so I think it should be buy on decline strategy should be applied. On a sector specific, there are some good momentum is seen in the realty, pharma, and healthcare space. So this should be kept in the watch list. Coming to derivatives data, so there was a short covering in Nifty futures in yesterday's session to the tune of 0.04%. This was fall in the open interest, and the put call ratio has actually declined from 1.07 to 0.98. So slight decline in the PCR data. The major writing is seen at 19,500 and 19,600. So this is going to act as a resistance from the derivatives point of view, and the put writing is seen at 19,400 and 19,300. So that will act as a support. Bank Nifty has seen a short built up to the tune of 11.70%, 70%, followed by increase in open interest. The put call ratio has also declined from 1.20 to 0.76 levels. The major call writing was seen at 43,700, and the good part is, and we saw some call unwinding at 44,200 strike price. So there is a very strong reasoning that if 43,800 is taken out, then definitely Bank Nifty, there will be a short covering will come in the market, and it will see a good upside in Bank Nifty. Whereas the put writing was 43,600 strike price. So that is going to act as a support. The stocks that are in ban are GNFC and Delta Corp. So we need to keep a watch on it. Net, the bias is positive for the market. Intraday correction we will view as a buying opportunity, and we'll wait for the Bank Nifty to cross 43,800. And once that level is taken, then I think we'll go aggressive with the Bank Nifty also. So that's a technical view. I'll hand over to Archana Madam for more research efforts. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, few updates from my side, starting with Somani Ceramics. The company reported their Q2 numbers yesterday. Decent kind of numbers. On top line, the company reported 653 crore, EBITDA was at 64 crore, and PAT was at 30 crore. Interestingly, unlike earlier quarters, the company hasn't reported any exceptional losses in this quarter, which has supported PAT growth of 152% on same quarter last year. The call is scheduled today. We'll interact with the management and post which will come out with a detailed note on Somani. The company has recently announced on this buyback of shares at 850 rupees per piece.
And given the good result and such kind of buyback, we believe that there could be short-term upside to the stock. Secondly, on Bata, disappointing set of numbers for this Q2. Top line was at 819 crores, which was down by almost 2 odd percent on same quarter last year, while EBITDA was down by 5 odd percent at 182 crores. EBITDA margins were down by 300 bips on same quarter last year, while the PAT was down by almost 38% same quarter last year to 34 crores. So very subdued kind of numbers by Bata. The call is scheduled today. We'll look out for the management commentary, how they look at the H2 of this year and overall strategy going ahead, and post which will come out with a detailed note on Bata. As of now, we have buy rating on the stock. Next is on Indian Hotels. The company has announced signing of 2 hotels in Bhutan. So these are kind of resorts under the Taj brand with 45 keys and 34 keys respectively. And in line with the management guidance of increasing the inventory going ahead. So we believe that this kind of new addition of hotels bodes well for the company's earnings growth going ahead. We have buy rating on the stock with a target price of 447. Next is on Century Ply. The company reported 10% YY growth in top line at 988 crores, while the EBITDA margin has expanded by 300 bips to 14.2%. The adjusted PAT was at uh, 93 crores, which is a growth of 19% on same quarter last year. Very good set of numbers by Century Ply. We have currently hold rating on the stock with a target price of 640. Next update is on Everest Kanto. Subdued set of numbers for Q2. The top line was at 2.9 billion, which is down by 12 odd percent on YY basis, while the EBITDA came in at zero point 0.4 billion, up by 15% YY, while the PAT was at 0.2 billion, up by 42% YY basis. We currently have hold rating on the stock with a target price of 109. Next update is on AMI Organics. The company reported 172 crore of top line, which is up by 12 odd percent. EBITDA margins were at 14%, and the EBITDA margins were impacted due to lower gross margins and higher employee costs. The PAT stood at negative 17 crores, and it was hit by the exceptional item of 32 crores. Currently, we have buy rating on the stock with a target price of 1450. And lastly, on Ashoka Bitcoin, the company reported good set of numbers. Top line came in at 1,560 crore, growth of 22% on same quarter last year. This was led by mainly because of the strong execution. On EBITDA, the company reported 143 crore, growth of 29%, while PAT was at 71 crore, growth of 9% on same quarter last year. Looks positive. The call is scheduled, today. We'll interact with the management, and post which will come out with a detailed note on Ashoka Bitcoin. So that's it from my side. I hand it over to Shantanu for further research updates. Thank you, and over to you, Shantanu. Thank you, Archana ma'am, and good morning, everyone. So, starting with some further updates. First update is on Power Finance Corporation, where the company on Wednesday reported a nearly 27% rise in its consolidated net profit. The overall net profit came at rupees 6,628.17 crores during the July to September quarter as compared to a year ago period. The consolidated net profit was rupees 5,229.33 crores in the quarter that ended September 2022, according to a BSE filing. Total income rose to 22,403.69 crores from rupees 19,344.39 crores on a year-on-year basis. Next update is on Tata Power, where the company on Wednesday reported 8.79% year-on-year growth in its consolidated net profit. Revenue for the period under the review rose by 19% to rupees 15,442 crores. The company attributed its growth in revenue and profits to its healthy balance sheet, operational excellence, and synergies across business clusters. Speaking of Lupin, the company reported a net profit of rupees 490 crores in the second quarter,
which is 277% higher as compared to rupees 130 crores that was clocked during the year ago period. Sequentially, the net profit grew by 8% from rupees 452 crores posted in the quarter ended in June 2023. Company's total revenue from operations came in at rupees 5,039 crores during the second quarter, which was higher by 21% on a year-on-year basis. Speaking of Raymond, the textile, apparel, and real estate conglomerate Raymond Limited on Wednesday reported a marginal rise in its net profit to rupees 159.78 crores from the September quarter. While the profit growth was modest as it came amid a delayed festive and wedding season, which typically contributes significantly to the company's sales, revenue from operations grew by 4% on a year-on-year basis to rupees 2,253.4 crores. Next update is on Hindustan Aeronautical, where the company signed a transfer of technology agreement with CSIR National Aerospace Laboratories on Wednesday for the manufacturing of BMI engine bay door for the series production of LCA Tejas Mk1A. Tejas Mk1A is an indigenous 4.5 generation all-weather and multi-role fighter aircraft for the Indian Air Force. HAL had requested for transfer of technology for the BMI engine bay door, and the TOT agreement has been reached. So overall, a positive update for HAL. Speaking of BHEL, the company on Wednesday reported a net loss of rupees 238 crores in the September quarter against a profit of rupees 12 crores during the year ago period. Revenue decreased by 1.5% at rupees 5,125.3 crores. A look at BHEL's April to June quarter's performance will reveal a 30.8% decline in its net loss from rupees 343 from rupees 34,389 crores in the previous quarter. Next update is on Pidilite, where Pidilite Industries on Wednesday posted a jump in the second quarter profit on the back of lower costs. The Fevicol maker posted a consolidated net profit of 4.5 billion rupees for the quarter that ended in September. Overall, it was up by 35% as compared to last year, while the profit growth was helped by an overall 50% decline in prices of vinyl acetate monomer, which is a key raw material for adhesives. Speaking of United Spirits, the company posted a net profit of rupees 2,865 crores, while the EBITDA was at rupees 470 crores versus the pool of rupees 417 crores. Overall, the numbers looked quite positive. Speaking of Birla Corp, net profit was at rupees 58.4 crores versus a loss of rupees 56.5 crores. Revenue too was up by 14.3% at rupees 2,285.8 crores on a year-on-year basis. So again, the numbers look quite positive. Speaking of Welspun Corp, the net profit was at rupees 384.7 crores, while the revenue was at rupees 4,059.5 crores compared to rupees 1,963 crores during last year. So a good year-on-year growth was seen in both profit as well as revenue. Next update is on PI Industries, where the net profit was at rupees 480 crores as compared to rupees 410 crores, while revenue was at rupees 2,117 crores as compared to rupees 2,148 crores on a year-on-year basis. Speaking of Biocon, the company has signed a definitive agreement with Eris Life Sciences for the divestiture of its business. Overall, it should be a positive update for Biocon. Speaking of GNFC, the company has approved a proposal to buy back 5.46% shares at rupees 770 per share for an amount of up to rupees 652 crores, which is a positive update for GNFC. Lastly, on Brigade Enterprises, the numbers of the company suggested a net profit at rupees 133.5 crores versus 77.6 crores
while revenue came in at 1,367 crores versus rupees 879 crores during the year ago period. So on year basis, the numbers look quite positive for Brigade Enterprises as well. So this was all from my end. I'll now hand it over to Hitendra for further updates. या थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सोमानी के नतीजे देखेंगे तो 653 करोड़ का एबिटा उन्होंने पोस्ट किया था। 64 करोड़ सॉरी रेवेन्यू 653 करोड़ का था, एबिटा 64 करोड़ का था, पैट 30 करोड़ का था। ओवरऑल देख रहे हैं मार्जिन वाइज तो 152% का हमने पैट में ग्रोथ देखा गया है वाई वाई बेसिस पे। टफ मार्केट के चलते कंडीशंस के और डोमेस्टिक वीक डिमांड के चलते कंपनी ने 6% का वॉल्यूम ग्रोथ किया गया है। टोटल 16.91 मिलियन स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमने सेल्स किए। सेल्स मिक्स दोनों उनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग 33% थी और जेवीज 34% थी और अदर्स 33% की थी। बाटा के देखिए तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ 1.3% जो कि 8191 मिलियन पे हुआ है। बेटा 5% डाउन था 1817 मिलियन पे। बेटा मार्जिन में 300 बिप्स का फॉल देखा गया अप्रोक्स। और नेट प्रॉफिट 38% से फॉल हुआ है जो कि 340 मिलियन के आसपास का। एग्रेसिव नेटवर्क एक्सपेंशन के चलते उन्होंने 30 स्टोर्स इन क्लोज टू 25 सिटीज में और फ्रेंचाइजी मॉडल्स के साथ 39% की ग्रोथ की। 54 स्टोर्स को रेनोवेट किया ड्यूरिंग द क्वार्टर। कंपनी का अकाउंट 409 मिलियन का हुआ है और फॉर वीआरएस क्वार्टर के लिए विच थोड़ा सा इम्पैक्ट किया पैट के लिए। इंडियन होटल्स ने भी दो नए ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट साइन किए। ताज ब्रांड के फोबिका भूटान में और 45 की ताज रिसोर्ट ऑफ पारो में और 34 की रिसोर्ट फोबिका में रहेंगे। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव रहेगा इंडियन होटल्स के लिए। सेंचुरी प्लाई के भी नतीजे थे। नतीजे में 9.7% का वाई वाई ग्रोथ दिखेगा। रेवेन्यू में 12% क्यू क्यू में देखा जो 987.9 मिलियन का है। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 270 वेब्स का जम एक्सपांड हुआ गया है बट कॉन्ट्रैक्ट पर 54 बिक्स क्वार्टर क्वार्टर में जो कि 14% के आसपास का है। और नेट प्रॉफिट देखे तो 19% का ग्रोथ देखा गया वाई वाई पे और 8% क्यू क्यू पे देखा है 929 मिलियन पे। करेंटली हमारी होल्ड रेटिंग है 640 की प्राइस टारगेट पे। एवरेज काउंटर सिलेंडर्स के भी नंबर्स देखे। रेवेन्यू देखा जाए 2.9 मिलियन का था जो कि 12% की फॉल देखिए। एबिटा 0.4 मिलियन का जो 15% फॉल है। एबिटा मार्जिन 14% के आसपास 14 जो कि 321 बिप्स का जंप है। नेट प्रॉफिट देखा जाए 0.2 मिलियन जो कि 42% के आसपास है वाई वाई पे। करेंटली होल्ड रेटिंग है। एमी ऑर्गेनिक्स के नतीजे देखे तो निराशाजनक ही। तो रेवेन्यू 172 करोड़ था जो कि 12% हाई था। बेटा मार्जिन देखे जो 14% था वर्सेस 19% के मार्जिन में हमें इम्पैक्ट आकर देखा है जो कि लॉस मार्जिन की और हाई एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से देखा। पैट देखा जाए तो महीने के जो 17 करोड़ का है जो कि स्टीपली हिट हुआ जो कि एक्सेप्शनल 32 करोड़ के आइटम की वजह से। सो रिजल्ट अच्छे नहीं थे। अशोका बिल्डकॉन के भी नतीजे देखेगा। रेवेन्यू 1560 करोड़ का जो कि 22% हाया था। एग्जीक्यूशन में बेटा एग्जीक्यूशन की वजह से बेटा देखा जाए 143 करोड़ का जो कि 30% आया था। बेटा मार्जिन देखा जाए 10% है। और नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं जो कि अप्रोक्स 712 मिलियन का है जो कि 9% हायर और अशोका बिल्डकॉन नतीजे पॉजिटिव। पीएफसी के भी हम नतीजे देख रहे हैं। 27% राइज देखे। नेट प्रॉफिट है जो कि 6,628 करोड़ का है जुलाई सितंबर क्वार्टर में। और अगर कंपनी देख रहे सेम क्वार्टर में 5,229 करोड़ का दिया था। और टोटल इनकम देखे जाए तो 22,403 करोड़ की इनकी क्वार्टर में थी जो कि 19,344 करोड़ की थी। टाटा पावर के नतीजे देखे हुए 9% का वाई वाई कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पोस्ट के जो कि 1,017 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट अगर लास्ट ईयर देखे तो 935 करोड़ के आसपास का है। रेवेन्यू देखा जाए 9% का जनरेट जो 15,442 करोड़ का है। लुपिन के भी नतीजे में नेट प्रॉफिट देखा जाए 490 करोड़ का है सेकेंड क्वार्टर में। और जो कि 277% हायर एज कम्पेयर टू 130 करोड़ का क्लॉक किया गया। सिक्वेंशियली नेट प्रॉफिट ग्रो 8% जो कि 452 करोड़ का है। कंपनी की टोटल ऑपरेशन अगर देख रहे हैं तो 5,039 करोड़ के आसपास आई जो कि 21% हायर है। रेमंड के भी हम नतीजे देख रहे हैं। 159 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखा गया जो कि 158 करोड़ का ऑलमोस्ट स्टैटिश प्रॉफिट था। और रेवेन्यू हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% है वाई वाई पे हमें ग्रोथ आती है देखिए। एचएएल ने एक साइन किया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जो भी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ रहेगा और बेसिकली इंजन का बे डोर है और एलसी तेजस और MK1 और जो कि 4.5 जनरेशन का ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट रहेगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। एचएएल ने रिक्वेस्ट किया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए बीएमआई इंजन बे डोर के साथ। बीएचईएल के भी नतीजे नेट लॉस रिपोर्ट किया 238 करोड़ का FY24 क्वार्टर में जो कि प्रॉफिट था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। रेवेन्यू में भी डिक्रीज हुआ है 1.5% में जो कि 5,125 करोड़ के आसपास का है। और हम देख रहे हैं अप्रैल जून क्वार्टर का परफॉर्मेंस रिव्यू देख रहे 30% डिक्लाइन था जो कि नेट लॉस 343.89 करोड़ का। टाटा रेलवे सिस्टम्स ने भी कहा कि वो प्लान कर रहे 700 करोड़ का QIB करने के लिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए शिप बिल्डिंग और ब्रिजेस और डिफेंसेस सेगमेंट में 4A करना चाहते हैं।
ऑल इंडिया के भी हम नतीजे देख रहे, रेवेन्यू देख रहे 80% ड्रॉप देखा गया, जो कि 2363 करोड़ का है। प्रॉफिट अगर देख रहे थे तो वो भी ड्रॉप हुआ 325 करोड़, जो कि पहले 721 करोड़ का था। ये प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स जो कि मार्जिन 42% था और नेचुरल गैस सेगमेंट में 24% था। प्रीलाइट के भी हम नतीजे देख रहे हैं। लोअर कॉस्ट के चलते हमें लेंडिंग बिजनेस में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 4.5 बिलियन के आसपास का है, जो कि 35% हायर है लास्ट ईयर के। प्रॉफिट में भी हम देख रहे 50% डिक्लाइन हुआ, क्योंकि विनाइल एसीटेट की प्राइसेस के बढ़ने के चलते। यूएसएल का भी नेट प्रॉफिट देखा जाए जो कि 2865 करोड़ है, जो कि पोल देखा जाए 231 करोड़, एबिटा देखा जाए तो 470 करोड़ है वैसे 417 करोड़ का है। बर्ला कॉप के भी नतीजे देखे जाए तो 58 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके लॉस 56 करोड़ का। रेवेन्यू देख रहे 15% था, जो कि 2285 करोड़ है, जो कि 2000 करोड़ का है। यही इंडस्ट्रीज के नतीजे देख रहे 410 करोड़ के सामने 480 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। रेवेन्यू देख रहे 2148 के सामने 2117, तो रेवेन्यू में थोड़ा सा टेपर होता है दिखा पीआई इंडस्ट्री में। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के नतीजे देख रहे तो 77 करोड़ के सामने 133 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। रेवेन्यू में भी अच्छी जंप आती है, जो कि 880 करोड़ के सामने 1357 करोड़ का पोस्ट किया है। बायोकॉन ने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है एरिस लाइफ साइंस के साथ, जो कि अपना बिजनेस को डाइवेस्ट करेंगे। लास्ट अपडेट है जीएनएफसी के ऊपर, उन्होंने एक प्रपोजल किया बायबैक के लिए, जो कि 5.5% कंपनी के शेयर बायबैक करेंगे एट द रेट ऑफ 770 के लिए, जो कि 650 करोड़ का अमाउंट होता है। So that's it from mine. Thank you everyone for attending the morning phone call. You may not disconnect.